Good morning, everyone. In the last lecture, we talked about agenda of meeting and the minutes of meeting. Now, in this section, we are going to talk about resume writing. So, I'm sure that you all are aware of the term resume. Okay. So, first, what is the meaning of resume? A resume is a short document used to summarize a job seeker's experience and qualifications for a prospective employer. A resume includes the job seeker's contact information, work experience, education, and relevant skills in support of a job application. It is usually required as part of a job application and it is considered essential information in order for an employer to assess whether an applicant would be a suitable candidate for a first round interview. It is an advertisement about self. It is portfolio demonstrating your skill and talent. A well organized resume will increase your chances of getting an interview. Okay, so we can say that it is a document in which the job seeker जो है जो कैंडिडेट है that advertise about self. वो अपनी स्किल्स बताता है, अपना टैलेंट शो करता है, so that मतलब ये एक तरह का होना चाहिए कि आप जो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उनको अट्रैक्ट करना चाहिए कि यस दिस इज अ सुटेबल कैंडिडेट. So your resume should be like that. Okay. Now there's another term, CV. Generally we use this matlab in the same sense, but they are not same terms. Okay. A resume is a 1 to 2 page document presenting key facts about your professional experience, educational background, and skills. CV stands for curriculum vitae or course of life. A CV is a longer document that details the whole course of your career. A resume is used for job search, a CV for academic purposes. So this is the difference between resume and CV. We can't use the same these terms in the same sense. Okay. So these are some differences. Resume means it emphasizes skills, and CV emphasizes academic accomplishment. For academic purpose, we make CV. Okay, and for job purpose, for job seeking purpose, we make resume. Resume is used when applying for a position in industry, non-profit and public sector. It is no longer than 2 pages with an additional page for publications and or poster presentations if highly relevant to the job. 2 पेज से ज्यादा नहीं होगा. It is called as a short document. ये short ही होता है. ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल डालनी हो अपने तो उसमें ऐड कर सकते हो. After 1 year of industry experience lead with work experience and place education section at the or near the end depending upon qualifications. जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आप उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करते रहते हो. Okay. CV is related to the academic accomplishment. It is used when applying for position in academia, like fellowships and grants. Length depends upon experience and includes a complete list of publications, posters, and presentations. Always begins with education and can include name of advisor and dissertation title or summary. Okay, so you can see these examples in your book also. Okay. Now, types of resume. On the basis of styles, there are following types of resume. First one is chronological resume. Chronological जैसे हमें नाम पे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक chronological order होता है. Chronological मतलब the order in which the event is occurred. Okay, so it consists of work history and educational qualification in chronological order. Nowadays, reverse chronological order is in practice. हम आजकल जैसे work experience पे हम ऐड करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम बिगनिंग से स्टार्ट, जो हमारा करंट है उससे हम स्टार्ट करते हैं. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चलते हैं. ओके. Then functional resume, it mainly focus on the candidate's skills and experience. Combination resume, it is mixed style resume showing best characteristics of the above mentioned both resume styles. It highlights skills and also includes detailed information about candidates' education and work experience. Okay. तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम जो होगा इसमें आप अपने एजुकेशन बताते हो, वर्क एक्सपीरियंस बताते हो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फंक्शनल रिज्यूम में आप अपने स्किल्स बताते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हो. ओके. कॉम्बिनेशन रिज्यूम में दोनों चीजों का मिक्सचर होगा. क्रोनोलॉजिकल में आपके एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह सब इंक्लूड आप करोगे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टाइल्स. नाउ देयर आर सर्टेन स्ट्रेटेजीज. Resume writing strategies. Resume must have an effective design. It should be easily readable.
and neat in appearance. It should be short, well spaced, must make a sincere effort to show factual representation, must be error free, show your strength, abilities, skills, and personal traits in such a manner that attracts the attention of the employer. बहुत ध्यान से अपने रिज्यूम में हर चीज का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। उसे ये लगना चाहिए कि यस दिस कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर आर वैकेंसी, जो आपने वैकेंसी पोस्ट है, तो दिस कैंडिडेट इज सुटेबल। सो आपको उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ, जो भी आपकी एबिलिटीज है, वो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, बट इन अ वेरी इफेक्टिव वे। नाउ व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ रिज्यूम? First one is heading. This part contains contact information like applicant's name, full postal address with PIN code, telephone number, email, etc. Then second one, position search, clearly mentioned for the requested job so that the company can clearly differentiate you and keep you in the category you are looking for. कई बार आप जॉब अप्लाई करते हो तो अलग अलग कैटेगरी दी जाती है कि आपको किस फील्ड के लिए आपको अप्लाई करना है। ओके, तो आप पहले यहाँ मेंशन करोगे कि आपने किस चीज के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, देन करियर ऑब्जेक्टिव, it is important and a special part of the resume. It should be mentioned only in 1 or 2 lines, showing positive, progressive, and clear objective of your career. If possible, try to match it with the job you have applied. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट शुड बी मेंशन। ओके, जहां तक हो सके अपना करियर ऑब्जेक्टिव ऐसा लिखो कि इट शुड बी रिलेवेंट टू द जॉब दैट यू हैव अप्लाइड। ओके, देन प्रोफेशनल समरी. It is an optional part of resume. It appears when someone want to highlight the relevance of his or her qualification, skills, etc. It could be in tabular form also. आप अपनी प्रोफेशनल समरी, मतलब ऑप्शनल पार्ट है, इसमें आप अपनी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन स्किल के साथ कुछ ऐड करना चाहते हो, मतलब उसके रेलेवेंस में कुछ एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड करना चाहते हो, देन यू कैन डू दैट। इट कैन बी इन द टेबुलर फॉर्म। Now, education. This part must include details about the educational qualifications, such as name of the school, name of the college, year of passing, percentage opted, etc. It could also be in the tabular form. Then work experience. It provides all the information regarding work experience. It should be in reverse chronological order. Reverse chronological order means जो अभी आपका current है. Okay. First, you will write about what you are doing now and moving to the past in reverse order. Okay, so this is done so that the employees can easily get the details of your present job or studies, which is of high priority for them. Okay, so it is given in the reverse chronological order. Then special skills or abilities. The applicant shows special skills or abilities best suited for the job. Activities, extracurricular, co-curricular, professional activities are going to be included into this part. It shows your extra indulgence, energy, and enthusiasm. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह जो है आप इसमें अपना ऐड कर सकते हो, जो आपकी एक्स्ट्रा मतलब एबिलिटी को शो करेगा वो आपकी। ओके, देन अचीवमेंट. Applicants' achievements, awards, accomplishment that make him or her differ from others should be included in this part, like fellowship, awards, scholarship, etc. जो भी आपके अचीवमेंट होते हैं वो आप इंक्लूड करोगे, जो आपको बताएगा, उसको एम्प्लॉयर को लगेगा यस दिस इज डिफरेंस। ओके, हो सकता है वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन सब जगह सेम हो, तो ये जो अचीवमेंट है यू कैन इंक्लूड इन दिस। Then it comes references. Some employer want references from the applicant's contact to judge him or to take professional review about him. If the applicant have any reference better, that could also be shown, or contact numbers, email IDs with name and designation should be given in this part of the resume. But make sure that whomsoever reference the applicant has given, he or she should say positive about the applicant. Okay, so यहाँ पर रेफरेंसेज कि आपके कोई नोन हो जो आपके काम से रिलेवेंट, आपके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सके, यू कैन ऐड। ओके, अगर मतलब एम्प्लॉयर को कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आपके लिए लेनी हो, अगर उसको इंटरेस्ट हो, तो वो रेफरेंस आपकी यूज कर सकता है, बट मेक श्योर दैट आप ऐसी ही रेफरेंस दोगे जो आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। ओके, ऐसा नहीं कि किसी को फोन करे वो आपके बारे में नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दे। सो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ओके, इसके अलावा आप कवर लेटर ऐड कर सकते हो, that measures your resume helps a lot in winning an interview.
Mention something about the company in the cover letter which relates to you. Also mention how keen you are work with them. Okay. सो बुक, अगर बुक उठाओगे तो आपको वहां पे एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे कि ये तो मैंने मतलब यहाँ पर कंटेंट्स जो है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द रिज्यूम. रिज्यूम और सीवी में क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर हमने ये देखा है. आप बुक में देखना और एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स, टुडे द सेकंड चैप्टर दैट इज द टेक्निकल राइटिंग इज आल्सो डन. ओके, सो now prepare for your exams. All the best. Thank you everyone.